हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश व्यापम गाइड। आज हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 29 अप्रैल 2026 के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में इन इंग्लिश विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफिशियल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मली अनाउंसिंग द CGBSC 2026 रिजल्ट इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, एजुकेशन मिनिस्टर गजेंद्र यादव। इन एक्सप्लेनेशन, छत्तीसगढ़ स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर गजेंद्र यादव formally declared the result for over 5.66 lakh students today at a press conference held at the मंत्रालय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि है, according to the recent cabinet decision, what is the new registration fee for properties registered in the name of women in Chhattisgarh? तो इसका right answer option C, 2%. In explanation, the Chhattisgarh cabinet approved a 50% reduction in land registration fees for women property buyers. Previously, the fee was 4%, but it has now been slashed to 2% to promote women's financial independence and property ownership. The next question है, a 25% concession in stamp duty has been approved for which of the following group for property purchases worth up to 25 lakh? तो इसका right answer है option B, defense personnel and ex-servicemen. In explanation, the state cabinet granted a one-time lifetime 25% concession in stamp duty for serving soldiers, ex-servicemen and their widows for properties valued up to rupees 25 lakh within the छत्तीसगढ़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि है, ए वन डे स्पेशल सेशन ऑफ द छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली इज स्केड्यूल्ड फॉर 30 अप्रैल 2026। व्हाट इज द प्राइमरी एजेंडा ऑफ दिस सेशन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ratification of the नारी शक्ति वंदन अमेंडमेंट। इन एक्सप्लेनेशन, द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कॉल्ड फॉर अ स्पेशल वन डे assembly session on 30 April to discuss and pass a resolution supporting the 33% reservation for women in legislative bodies. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ रिसेंटली रिपोर्टेड द डिस्कवरी ऑफ अ 1500-year-old कॉपर प्लेट एडिंग सिग्निफिकेंट वैल्यू टू द स्टेट्स आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बिलासपुर मल्हार। इन एक्सप्लेनेशन, आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड अ 1500-year-old कॉपर प्लेट इन द हिस्टोरिकल टाउन ऑफ मल्हार, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट. दिस फाइंड प्रोवाइड्स क्रूशियल insight into the ancient administrative and cultural heritage of the region. Next question है, what is the name of the newly launched mobile application intended to provide Chhattisgarh's worker with direct access to job opportunities and government welfare scheme from home? तो इसका right answer option C, E-Shram Sathi. In explanation, the E-Shram Sathi app was launched on 29 April 2026 to digitized worker welfare. It allows an organized sector worker to apply for benefits and track job openings without visiting government offices. तो next question है, as per the recent road safety notification, for which group has the use of helmet and seat belt been made mandatory in Chhattisgarh with department action for violation? तो इसका right answer है option C, government employees. In explanation, to lead by example in road safety, the state government has made it mandatory for all the government employees to wear helmet on two-wheelers and seat belt in four-wheelers while commuting to work. Next question है, छत्तीसगढ़ recently won the Best Emerging Tourism Destination Award at which prestigious international travel event in 2026? तो इसका right answer option B, GIITB 2026. In explanation, Chhattisgarh was recognized as the Best Emerging Tourism Destination at the GIITB 2026 event, highlighting the state's success in promoting eco-tourism and tribal heritage. तो next question हम discuss करेंगे जो कि है, which new state scheme was highlighted on 29 April 2026 for building massive sports infrastructure with a budget of rupees 100 करोड़? तो इसका right answer option B, मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन. In explanation, the Chhattisgarh government officially launched the मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष mission with a dedicated budget of rupees 100 crore. This mission aimed to identify and mature
grassroots talent and developed international standard sports facilities across the states. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि है विच एथलीट फ्रॉम छत्तीसगढ़ रिसेंटली मेड headlines for her performance in football during the खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी किरण पिस्दा. इन एक्सप्लेनेशन, किरण पिस्दा, a star footballer from Chhattisgarh, was recognized for her grit and leadership. Under her, the host team claimed the women's football gold in the inaugural edition of the games. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुछ की हाईलाइट्स, जिसमें फर्स्ट है द स्टेट कैबिनेट लेड बाय चीफ मिनिस्टर विष्णु देव साय अप्रूव्ड सेवरल पॉलिसी चेंजेस टू टुडे. वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स, अ 50% रिडक्शन इन लैंड रजिस्ट्रेशन फीस फॉर प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड इन अ वुमेन्स नेम टू प्रमोट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. नेक्स्ट है डिफेंस पर्सनल बेनिफिट, ए 25% स्टैम्प ड्यूटी कंसेशन फॉर डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन एंड विडोज फॉर प्रॉपर्टी वर्थ अप टू 25 लाख. फिर नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड, द government is advancing the process of drafting a UCC for the state by forming a high level committee. फिर नेक्स्ट है गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें है ई श्रम साथी ऐप लॉन्च्ड टुडे. दिस ऐप अलाउ वर्कर्स टू एक्सेस गवर्नमेंट स्कीम एंड जॉब ओपनिंग्स डायरेक्टली फ्रॉम होम. नेक्स्ट है रोड सेफ्टी, हेलमेट्स एंड सीट बेल्ट्स आर नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. वायलेशन विल लीड द डिपार्टमेंटल एक्शन. फिर नेक्स्ट है डिजिटल सेंसस 2027, सिटीजन्स आर अर्ग्ड टू complete self-census forms on the government portal. Phase 1 housing listing begins on 1 May 2026. Next question है as per the CGPSC 2026 result declared today, who is the constitutional authority that oversees the Chhattisgarh Board of Secondary Education. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन as chairman. In explanation for administrative MCQs, remember that while the minister Gajendra Yadav announces the result, the secretary of school education typically act as the ex officio chairman of the board. Next question है जो कि हम डिस्कस करेंगे. A 1500-year-old copper plate was recently unearthed in Malhar, Bilaspur. Which ancient dynasty is most likely to be associated with such finding in this region? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सरबपुरिया डायनेस्टी. इन एक्सप्लेनेशन, मल्हार was a major center for the Sarabpuriya and Somvanshi rulers. Copper plates found in this region typically detail land grants and administrative डिविजन्स फ्रॉम द 5th-6th सेंचुरीज़. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हम डिस्कस करेंगे, द नारी शक्ति वंदन स्पेशल असेंबली सेशन स्केड्यूल्ड फॉर 30 अप्रैल 2026 इज़ नोटेबल फॉर विच यूनिक जर्नलिस्टिक अरेंजमेंट. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, करेज एक्सक्लूसिवली बाय वुमेन जर्नलिस्ट. इन एक्सप्लेनेशन, टू मार्क द हिस्टोरिक ratification of the women's reservation bill in the state assembly, the government invited only women journalists to cover the proceeding from the press gallery, first in the state's legislative history. फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ की पॉइंट्स इन्वायरमेंट एंड हिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें है फर्स्ट हिस्टोरिकल डिस्कवरी. ए 1500-year-old copper plate was unearthed in Malhar, Bilaspur, marking a major archaeological find for the state. फिर नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल क्राइम, ओवर 1 lakh trees were illegally felled in the Sita Nadi Tiger Reserve, leading to 166 cases being filed. फिर नेक्स्ट एग्रीकल्चर, सक्सेसफुल ट्रायल्स ऑफ ग्रीन मैन्यूर ऑन 600 hectares have positioned it as a sustainable alternative to urea. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ई श्रम साथी ऐप launched on 29 April 2026 primarily target which segment of the workforce. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स. इन एक्सप्लेनेशन, अंडर द लेबर वेलफेयर segment of the CGPSC mains paper 7, this app is a prime example of digital intervention. It helps workers register for 15+ state sponsored scheme directly. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्विक रिविजन फैक्ट, जिसमें फर्स्ट है रेवेन्यू इम्पैक्ट. द 50% कट इन लैंड रजिस्ट्रेशन फॉर वुमेन विल कॉस्ट द ट्रेजरी 153 crore बट एम्स टू इम्प्रूव द जेंडर प्रॉपर्टी ओनरशिप रेशियो. फिर नेक्स्ट है आर्कियोलॉजी, द मल्हार डिस्कवरी कन्फर्म्स द प्राग पतना एंशियंट टाउनशिप स्टेटस ऑफ द रीजन. फिर नेक्स्ट है लीगल, द UCC कमिटी अंडर जस्टिस रंजना देसाई
is patterned after the उत्तराखंड मॉडल, ए की पॉइंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स क्वेश्चन। फिर हम डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि है द मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना हाईलाइटेड इन द रिसेंट स्टेट अपडेट इज प्राइमरली एम्ड एट, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर रेंटल रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट। इन एक्सप्लेनेशन, एज पार्ट ऑफ द एजुकेशनल रिफॉर्म दिस स्कीम प्रोवाइड सपोर्ट टू मेरिटोरियस स्टूडेंट फ्रॉम इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड हु नीड टू रेंट एकोमोडेशन इन सिटीज़ फॉर हायर स्टडीज़। तो आज हमने डिस्कस किया छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 29 अप्रैल 2026 के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ के फॉर्म में इन इंग्लिश विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।